Yasomati Nandana Braja Bhadanagara Gokula Thanasam Gokula Yasomati Nandana Brajavaranagara Gokularanjana Ahanhavam Gopiparanandanam Madhanam Manoharam Gopiparanandanam Madhanam Manoharam Kauriyadamana Vidhana Kauriyadamana Vidhana Hamala Harina Mamiya Vilasaha Mamiya Hamala Harina Mamiya Vilasaha Vipina Purandhara Navina Nagara Vara Vamsi Vadara Subhasayim Navina Nagara Hey Bhajajana Pavana Surakulanasana Bhajajana Pavana Surakulanasana Handa Gojana Rakohara Handa Gojana Rakohara Govinda Maharaja Navanita Thasa Govinda Maharaja Navanita Thasa Sundarananda Gopala Sundarananda Gopala Jamuna Tattachara Gopi Vasanohara Jamuna Tattachara Gopi Vasanohara Hey Rasa Rasika Kita Moya Rasa Rasika Kita Moya Hey Srila Bhagavatam Vrindavana Natapara Srila Bhagavatam Vrindavana Natapara Hey Srila Bhagavatam Vrindavana Natapara
Bhakti Vinoda Sahaya Srila Bhakti Vinoda Sahaya Hey Yasomati Nandana Brajavara Nagara Gokura Hey, Hamarina, Namiyavi, Lasa, Govinda Madhava, Namanita, Tasararo, Yamuna Tatachara, Gopi, Rasanohara, Sri Radha Vrindavana Natavara Sri Radha Vrindavana Natavara Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Hare. Thai Gaur Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Gaur Premanande, Hari Hari Bol, Srila Prabhupada ki jai. Harinam Sankirtan ki jai. Hare Krishna Mahamantra ki jai. Srila Bhakti True Swami Maharaj ki jai. So, Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 5. This is verse 12 and 13. Which one's on the board? 12? And this chapter is entitled The Meeting of Nanda Maharaj and Vasudeva. हरे कृष्णा. हम श्रीमद् भागवतम का स्कंध 10 अध्याय 5 श्लोक संख्या 12 और 13 का पाठ कर रहे हैं. अध्याय का शीर्षक है नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. Tad ashisha padyujanas Chirambahiti balake Haridra churna taladvibi हरिद्रा चूर्ण तैलाधि Sinchatyo gyanam ujjagahu Tadashishad payujanas Chirampahiti balake
Haridra Churna Thailabi Sinchat Yogyanam Ujjagahu Tadashisa Prayujanas Chiram Pahiti Balake Haridra Churna Thailabi Chinchatyo Gyanam Ujjagahu. Chiram Pahiti Balake Haridra Churna Thailabi Sinchantyo Janamujjagu. Ladies? Anyone else? All the women, the wives and daughters of the cowherd men, Ashisa, blessings, Prayuj Janaha, offering, Chiram, for a long time, Pahi, may you become the king of Raj, and maintain all of its inhabitants. Iti, thus, Balake, unto the newborn child, Haridra Churna, power of turmeric, Taila Abhi, mixed with oil, Sinchatya, sprinkling, Agyanam, the Supreme Personality of Godhead, who is unborn, Ujjagahu, offering prayers. Translation. Offering blessings to the newborn child, Krishna, the wives and daughters of the cowhead men said, may become the king of Raj and long maintain all its inhabitants. They then sprinkled a mixture of turmeric powder, oil, and water upon the birthless Supreme Lord and offered their prayers. Yeah. Go ahead. Read the translation. अनुवाद। ग्वालों की पत्नियों तथा पुत्रियों ने नवजात शिशु कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा, आप व्रज के राजा बने और यहाँ के सारे निवासियों का दीर्घ काल तक पालन करें। उन्होंने अजन्मा भगवान पर हल्दी, तेल
तथा जल का मिश्रण छिड़का और प्रार्थनाएं की। This is verse number 13. Avadyanta vichintrani vadutrani mahotsave Krishna Vishvasvare Nante Nandasya Raja Agate. Now that the all-pervading, unlimited Lord Krishna, the master of the cosmic manifestation, had arrived within the estate of Maharaj Nanda, various types of musical instruments resounded to celebrate the great festival. अनुवाद। चूंकि अब सर्वव्यापी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी अनंत भगवान कृष्ण महाराज नंद की पुरी में पदार्पण कर चुके थे, अतएव इस महान उत्सव के उपलक्ष्य में नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए गए। Srila Prabhupada's purport. The Lord says in Bhagavad Gita, chapter 4, verse 7, Yada yada hi dharmasya ganir-bhavati bharatam abhutanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharat, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. Whenever Krishna comes, once in the day of Brahma, he comes to the house of Nanda Maharaj in Vrindavan. Krishna is the master of all creation, Sarvaloka Maheshwaram. Therefore, not only in the neighborhood of Nanda Maharaj's estate, but all over the universe and in all other universes, musical sounds celebrated the auspicious arrival of the Lord. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7 में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य होता है, तब तब हे भरतवंशी मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। ब्रह्मा के एक दिन में जब भी कृष्ण अवतरित होते हैं तो वे वृंदावन में नंद महाराज के घर में ही आते हैं। कृष्ण सारी सृष्टि के स्वामी हैं, सर्वलोक महेश्वरम। अतः न केवल नंद महाराज के व्रज के पड़ोस में अपितु सारे ब्रह्मांड में तथा अन्य सभी ब्रह्मांडों में भगवान के शुभ आगमन पर वाद्य यंत्र बज उठे। Om Agyantimirandasya Ganajana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pacharine Nirvasesa Sunyavadi Pastyatya De Satarine Panchakalpa Tarubhischa Kripa Sindhu Pyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namaho Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Celebration. उत्सव हो रहा है। Ananda ke Ananda Varya. नंद के आनंद, Ananda ke Ananda Varya. Hati Gauda Palaki. That's the sounds that were being made. They were greeting the Supreme Personality of Godhead. It's a joyous occasion when the Lord appears. Everything becomes auspicious. तो जब भी भगवान प्रकट होते हैं तो हर जगह उत्सव मनाया जाता है और पूरी दुनिया में हर्षोल्लास छा जाता है। So, and it mentions he always appears in the house of Nanda. और Nanda यहाँ पर Maharaj. उल्लेख किया गया है कि वे हमेशा नंद महाराज के घर में प्रकट होते हैं। He chooses who he wants as his parents. भगवान स्वयं चयन करते हैं कि उनके माता पिता कौन होंगे। No one can become the parent of the Supreme Personality of Godhead. भगवान का माता पिता कोई अन्य नहीं हो सकता, Because he is
unborn, aja. क्योंकि वो अज हैं, अजन्मा. That means that what his appearance appears to be similar, not exactly, but similar to the appearance of an ordinary child in this world. तो उनके जो माता पिता भी हैं वो भी साधारण बच्चे के माता पिता जैसे ही दिखते हैं. But it's not. पर ऐसा नहीं है. It's divya. यह अलग है. In other words, it is under his spiritual energy that he appears, and by his appearance he makes everything auspicious. तो उनके माता पिता भी भगवान की दैवी प्रकृति में ही रहते हैं और वहाँ सब कुछ मंगलमय होता है. Sometimes people say, well, he appeared 5,000 years ago. What about now? We need him now again. तो कभी कभी लोग कहते हैं भगवान तो 5,000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे, अभी क्या हमें उनकी अभी भी जरूरत है. That's for those who have no understanding, so they say that. तो ये उनके लिए जिनको कुछ समझ नहीं है. Srila Prabhupada said he has appeared in his incarnation in this age in his deity form. तो भगवान श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस युग में भी भगवान अपने विग्रह के रूप में प्रकट हैं. Arche Vishnu Sila Di Guru Shunomati Vaishnava Jati Beauty, and the verse goes on. From the Padma Purana it explains that anyone who thinks that the deity is made out of material elements is also Jati Bhuti, and intelligence is really disturbed. तो पद्म पुराण में यह श्लोक आता है कि जो भी यह सोचता है कि भगवान का श्री विग्रह भौतिक पदार्थों से बना है वह भी जाति बुद्धि में है. But in this age he comes Kali Kale Nama Rupa Krishna Avatar Nama Hoite Haya Sarva Jagat Nistara, comes in the form of his holy name. लेकिन इस युग में भगवान विशेष रूप से अपने हरि नाम के रूप में आते हैं. And Prabhupada said, of course, he also quotes this verse quite often, Yada Yada Dharmasya. So he comes for these three reasons. तो प्रभुपाद बताते हैं और यहाँ श्लोक में बताया भी गया है कि भगवान यदा यदा ही धर्मस्य श्लोक के माध्यम से कि भगवान 3 कारणों से आते हैं. And he kills demons. वो असुरों का नाश करते हैं. But nowadays the demons are so small. लेकिन अभी आज के युग में असुर बहुत छोटे छोटे हैं. Kali Yuga, everything is reduced. कलयुग में सब कुछ नगण्य हो गया Even है. the quality of the demons. यहाँ तक कि असुरों की गुणवत्ता भी कम हो गई है. The only problem is there are more of them in this age. लेकिन समस्या ये है कि अब उनकी संख्या बढ़ गई है. In 1972, Srila Prabhupada was talking about this verse, and he was saying, and yes, the demons will increase, and this is Kali Yuga, so you can expect more disturbances. तो 1972 में श्रील प्रभुपाद लेक्चर बता रहे थे इसी श्लोक पे और बता रहे थे कि आज के युग में जो असुर हैं वो ज्यादा संख्या में बढ़ गए हैं, इसलिए हमारे जीवन में ज्यादा समस्याएं हैं. If you take shelter of Krishna, then Krishna will give you complete and perfect protection. तो लेकिन यदि हम भगवान श्री कृष्ण की शरण लें, उनका आश्रय लें, तो हमें पूरा वो सुरक्षा प्रदान And करेंगे. Prabhupada used the example how Prahlad Maharaj was harassed so much by his demoniac father, so much so that his father in so many ways tried to kill him, but it was ineffectual. तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि प्रहलाद महाराज को उनके पिता ने बहुत प्रताड़ित करने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद महाराज अप्रभावित रहे. So you might say, well, I'm not Prahlad Maharaj, how can I get that kind of protection? तो हम ये कह सकते हैं हम तो प्रहलाद महाराज जैसे हैं नहीं, तो हमें भला ऐसी सुरक्षा कैसे मिलेगी. But in this age, the chanting of the holy name is extremely merciful. तो लेकिन इस युग में भगवान के हरि नाम का जप यह बहुत ही करुणामय है. I'll tell a little ISKCON pastime. मैं आपको इस्कॉन का एक पास टाइम लीला बताऊंगा. Prabhupada had 1971, I believe it was. There was the war in Bangladesh. Was that the right year? 71? तो 1971 की बात है. उस समय बांग्लादेश के साथ युद्ध चल रहा था. And Prabhupada had sent 2 of his sannyasis to preach in the war zone. और श्रील प्रभुपाद ने अपने 2 सन्यासियों को उस युद्ध की क्षेत्र में प्रचार करने के लिए भेजा. Jai Sri Radha Madan Mohan Krishna Balaram Gaur Nitai Jagannath Baladev Subhadra Maharani Prahlad Nrsingadev
key. You have quite a few deities here. You've covered all the lokas. There's no loka missing. तो बहुत ही अलग अलग विग्रह आपने सारे लोगों को यहाँ पे रखा है, ज्यादा कृपा मिलेगी. So Prabhupada had sent these two sannyasis. One was Brahmananda Maharaj, one of Prabhupada's first sannyasis, first devotees who joined the Hare Krishna movement back in New York in 1965-66. तो उन सन्यासियों में से एक थे श्री श्रीमद ब्रह्मानंद स्वामी महाराज. वो शुरुआती दिनों के पहले सन्यासी, या शुरुआती दिनों के बहुत ही पहले सन्यासी, या बहुत पहले भक्त बोल सकते हैं, जो करीब 1965-66 में ही जुड़े थे. And there was one other, I don't remember who the other person was. Huh? Gargamuni, that's what I was, yeah, Gargamuni. So they're brothers, and they were preaching in that area. And so the war was going on, so people were, and it was getting more and more dangerous for foreigners to be there. So the local people were saying, you know, I think you should get out of here. Some of the local Hindus. तो दूसरे जो सन्यासी थे वो थे श्री श्रीमद गर्गमुनि स्वामी महाराज. तो वो दोनों वहां पर प्रचार कर रहे थे, और युद्ध के कारण वहां पे प्रचार करना मुश्किल हो रहा था. वहां के स्थानीय निवासी भी कह रहे थे अब आपको यहाँ से निकल जाना ही उचित होगा. So, and then the Islamic army at the time were arranging buses to let, you know, immigrants or innocent people who weren't involved with the war, they could cross the border and leave the country. तो प्रवासी लोगों के लिए एक बस का आयोजन किया गया जिससे वो देश छोड़कर जा सके. And Prabhupada was really concerned. He tried to reach them by letter and different means, but everything broke down because of the war. तो श्रील प्रभुपाद भी उनके लिए काफी चिंतित थे. वह उनसे पत्र के माध्यम से संपर्क भी करना चाहते थे, लेकिन संचार की सारी व्यवस्था ठप थी इस युद्ध के कारण. And so they decided to leave, so they got on one of the buses to get out of the country. तो वो दोनों भक्त भी बांग्लादेश छोड़ने का प्रयास किए और बस में बैठकर देश के बाहर निकले. But they were caught at the border by the Islamic army. लेकिन वो इस्लामी लोगों के कारण उन्हें सीमा पर ही पकड़ लिया गया. And they put them in front of a firing squad. They were going to execute them. और उन्हें एक फायरी स्क्वाड के सामने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें सजा देने के लिए उद्यत थे. So Brahmananda, he had his beads in his hand. और श्री श्रीमद ब्रह्मानंद महाराज के पास उनके जप माला थी. So he got inspired. और उन्हें बहुत ही प्रेरणा मिली. Start waving his beads in the air. वो अपनी जप माला ऐसे हवा में लहराने लगे. And started to chant really loud. और हरि नाम का जोर जोर से जप करने And लगे. he also said, "We're going back to Godhead." और वो बोले हम तो भगवत धाम जाने वाले हैं. And of course, Gargamuni picked up on it, so they both were doing it. And then the Islamic army got bewildered by Krishna, obviously. श्री श्रीमद गर्गमुनि स्वामी महाराज भी ऐसा ही कर रहे थे, और जो इस्लामिक लोग हैं वो उनसे विचलित हो गए उनके भगवान कृष्ण के प्रति विश्वास को देख के. So they stopped the proposed execution, told them to get on the bus and don't come back. और उन्होंने उनको सजा देने को टाल दिया, उनको मारने से छोड़ दिया और उन्हें देश छोड़ के जाने को कहा. The power of Krishna's holy name and Prabhupada's prayers, obviously. Prabhupada was praying for them also. तो ये हरि नाम की शक्ति और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण श्रील प्रभुपाद की उनके लिए प्रार्थनाएं. So in this age there are so many disturbances. It's just the way life is. This is Kali Yuga. तो ये भौतिक जगत में ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं हैं. ये कलयुग में ऐसे ही होता है. But Prabhupada said Devaki, she had to undergo so many harassments by her brother, almost being killed, saved only by the intelligence of her good husband Vasudeva. तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि माता देवकी को भी बहुत प्रताड़ित किया गया, लगभग उन्हें मार दिए ही जाने वाला था, लेकिन उनके पति वसुदेव महाराज की सुबुद्धि के कारण वह बच सकी. I remember that tape. Prabhupada said, "Don't worry, the demons can't do anything." मुझे याद है श्रील प्रभुपाद कहा करते थे चिंता मत करो. They caused some disturbances
For the materialists, they destroy everything, but for the devotees are always under the shelter of the lotus feet of the Lord. कि जो ये असुर लोग हैं ये अपने भौतिक जगत में उनकी कई सारी आकांक्षाओं के कारण कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो हमेशा भगवान में दृढ़ विश्वास के कारण सुरक्षित रहते हैं। And devotees know there's no other shelter. और भक्तों को पता है कि भगवान के अलावा कोई दूसरा आश्रय नहीं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So when Krishna appears, whether it's in the form of his holy name, whether it's in his form of his deity, or whether he personally appears in his transcendental form, coming from the spiritual world, everything becomes auspicious. तो भगवान कृष्ण चाहे जिस भी रूप में प्रकट हो, चाहे अपने नाम के माध्यम से, विग्रह के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से स्वयं, उनके उपस्थित रहने से सब कुछ दिव्य हो जाती है और सब मंगलमय रहता है। And all of the cowherd men and all the villagers in the cow, they all benefited because of Nanda Maharaj's connection with Krishna. और सारे गोपियां, गांव के सारे लोग, सबको बहुत ही लाभ हुआ क्योंकि वहां पे नंद महाराज के घर भगवान प्रकट हुए। It was not only Nanda Maharaj and Mother Yasoda who received the full benefit, but everyone in the village. यह केवल नंद महाराज और माता यशोदा के लिए लाभ नहीं था, ये पूरे गांव वालों के लिए था, सबके लिए। So it was a grand celebration all over. तो यहाँ महा महोत्सव मनाया गया। Now Krishna is there. क्योंकि वहाँ भगवान कृष्ण आ गए थे। Yeah, and he's performing his pastimes every minute. और वे अपनी लीला हर जगह कर रहे थे। And we see that Kamsa, he's worried. और हम देखते हैं कि कंस वो चिंतित था। We all know how somehow or other Krishna escaped from the jail by the arrangement of Vasudeva and by his own transcendental arrangement. And this was given by Narada Muni to Kamsa, that the child that you are afraid of, he is already born. तो हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हैं, वे कंस के जेल से बाहर निकल गए वसुदेव महाराज और अपने खुद के दिव्य व्यवस्था के अनुसार। और नारद मुनि ने कंस को बताया था कि जो भी संतान देवकी माता का आपको मारेगा वह पहले ही जन्म ले चुका है। Kamsa is sending one demon after another. और कंस एक के बाद एक असुर भेजने लगा। And you read about it. Next chapter is Putana. और हम अगले अध्याय में पूतना के बारे में पढ़ेंगे। Sakatasura, शकटासुर, तृणावर्त, all of these demons one after another. ये सारे असुर एक के बाद एक आते रहे। But Krishna, he likes to kill demons. लेकिन भगवान श्री कृष्ण को असुर का संहार करना पसंद है। There's a class of people who hear about Krishna's pastimes, but they don't really like too much or not attracted to Krishna's pastimes, killing demons. तो कुछ विशेष वर्ग के लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनना पसंद करते हैं, लेकिन वो ऐसी लीला नहीं श्रवण करना पसंद करते जिसमें भगवान असुरों का वध करते They हैं। like to hear Krishna's pastimes with the gopis. वे भगवान श्री कृष्ण का जो लीला है गोपियों के साथ श्रवण करते हैं। Prabhupada talks about it. They avoid hearing Krishna killing demons. श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे लोग, वे लोग भगवान श्री कृष्ण जो असुरों का वध करते हैं, ऐसी लीलाओं को सुनने से बचते हैं। But devotees are very non-violent, right? Even if we step on an ant by mistake, we feel really terrible. Devotees are really, their hearts are so soft and so free from any negativity to any living entity, that if any living entity becomes harmed, they feel unhappy about that unnecessarily. तो हम देखते हैं कि भक्त लोग जो स्वभाव से ही अहिंसक होते हैं, वे कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, और गलती से किसी चींटी पे भी चढ़ जाएं तो उसके लिए बहुत ही दुख उनके हृदय में होता है। But when Krishna kills the demons, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण असुरों का वध करते हैं, it's a celebration. वे उत्सव मनाते हैं, ये उत्सव है। The cowherd boys say, "Well done, well done." तो सारे जो गोप हैं, ग्वाल बाल हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। One time Krishna killed one demon. एक बार भगवान श्री कृष्ण ने एक असुर का वध किया। And all of the cowherd boys, they circled around Krishna. How did you do that? That was a big demon.
और तो सारे जो ग्वाल हैं वो भगवान को घेर लिए और बोलने लगे, अरे तुमने यह कैसे किया? I can't do that. भगवान ने कहा कि मैं तो नहीं, And yes, अच्छा मैं तो नहीं कर सकता। and yesterday I beat you in wrestling. तो कल तो हम और तुम युद्ध कुश्ती कर रहे थे। Another boy said, yeah, yesterday I took his lunch and he started crying. एक दूसरे बालक ने कहा कि कल मैंने इनका जो दोपहर का भोजन है वो ले लिया था और भगवान रोने लगे। What's your secret? How did you kill that demon? तुम्हारा रहस्य क्या है? तुम उस राक्षस को कैसे मार सकते हो? And Krishna didn't say anything. और भगवान ने कुछ नहीं He was कहा, quiet. वो शांत थे। Then they start guessing. और फिर वे अंदाजा लगाने लगे It's his mother. कि शायद इनकी माता She के कारण gives him a special demon killing mantra before he leaves in the morning every day. तो लगता है इनकी माता कुछ असुर को वध करने वाला मंत्र इनको पढ़ के भेजती हैं जिससे ये सुरक्षित रहे। Another boy said, yeah, it is his mother, but she puts these armlets and amulets on his body and he has all these powers. तो उनके हाँ बंधुओं ने कहा कि इनके माता ही कुछ ताबीज वगैरह देती हैं इनको जिससे ये असुरों का वध कर सके। And they're going back and forth trying to guess. Krishna is still quiet. और ऐसे ही भी अंदाजा लगाते रहे और भगवान शांत ही रहे। Then Krishna says, फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, you want to know? तुम जानना चाहते हो? Yeah. So now they're all excited. Krishna going to tell them the secret. तो अब सारे ग्वाल बाल बहुत ही खुश हैं कि भगवान उनको अपना रहस्य बताने वाले हैं। And he said, when I was born, there was a nice sage, very powerful sage, came to see my father in the secret meeting. तो जब मैं जन्म लिया था तो एक बहुत ही शक्तिशाली एक ऋषि मुनि मुझको देखने आए थे और उन्हें एक बात बताई। And he told my father, he said, this boy is just like Narayan. और उन्होंने एक बात बताई कि ये जो बालक है यह नारायण के ही समान है। In fact, he is Narayan. और वस्तुतः यह नारायण ही है। So then Krishna turned to the cowherd boys and said, if you want to know, I'm God. तो फिर भगवान कृष्ण ने बताया, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं ही भगवान हूँ, मैं ही नारायण हूँ। And they all start laughing. Oh, he's God. और फिर वो सब बालक हंसने लगे, अरे ये भगवान है। He always speaks nonsense, but now he's really speaking nonsense. ये तो बस फालतू की बातें करता है, लेकिन अभी तो कुछ ज्यादा ही फालतू बात कर रहा है। And they're laughing. और वे सब हंस रहे थे। And Krishna's laughing. और भगवान भी हंस रहे And थे। everybody's laughing. सब लोग हंस रहे And थे। Krishna says, all right, let's go play. तो फिर सोचे चलो अब चल के खेल ही लेते हैं। And that pastime took place in a place called Hashyavan. और यह जो लीला हुई थी Hashyavan. हास्यवन। Hashya. Hashya means laughter. हास्य मतलब हंसने वाले। So if you go there and hear that pastime, you can't stop laughing. और अगर आप उस जगह पे जाएं और ये लीला सुने तो आप हंसना रोक नहीं सकते। And when I was reading that pastime, His Holiness Shiva Ram Maharaj concludes it in one of his books. He writes about it. So I was reading it, and after I finished, I couldn't read anymore because I was laughing so much. तो जब मैं इस लीला को पढ़ रहा था, श्रीमद शिवराम स्वामी महाराज अपनी एक पुस्तक में इसके बारे में बताते हैं, तो मैं आगे पढ़ नहीं पाया क्योंकि मुझे इतनी हंसी आ रही थी। So nobody believes Krishna is God. कोई भी यह नहीं मानने को तैयार है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है। Those in Vrindavan anyway. जो वृंदावन में है उनके लिए। And if they find out, then Krishna makes them forget anyway. और अगर वो पता लगा लेते हैं कि वे भगवान हैं तो भगवान उन्हें भुला देते हैं। When Krishna ate dirt, जब भगवान मिट्टी खाए थे, Lord Balaram, his older brother, his protector, came to Mother Yasoda and saying, now your son's eating dirt. तो उनके संरक्षक उनके बड़े भाई बलराम जी आए और माता यशोदा से बताएं कि आपका पुत्र मिट्टी खा रहा है। She became worried, he's going to get sick. तो माता यशोदा को चिंता हो गई, अरे ये बीमार पड़ जाएगा। God's going to get sick. भगवान भी बीमार हो सकते हैं। So
She's concerned, so she takes baby Krishna, puts him on her lap, and she opens his mouth, and she looks in there trying to find the dirt. तो माता यशोदा अपने बच्चे को गोद में उठाती हैं, उनका मुंह खोलती हैं और उसमें मिट्टी खोजने का प्रयास करती हैं। But what does she see? और उसमें वो क्या देखती हैं? She sees the whole cosmic universe. तो उसमें वो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करती हैं। All the planets, all the universes. सारे लोग, सारे ब्रह्मांड। Then she sees herself looking into the mouth of Krishna, in the mouth of Krishna. और वे खुद को भगवान श्री कृष्ण का मुंह देखते हुए भगवान के मुंह में देखती हैं। Now she's really bewildered. She's thinking, am I dreaming? Is some kind of ghost come here or something? तो वो पूरी तरीके से अचंभित हो जाती हैं, सोचती हैं क्या मैं कोई सपने देख रही हूँ या फिर कोई असुर का ये प्रभाव है। And then Krishna thinking, then she starts to think, well, maybe he's God. तो वो सोचते हैं कि शायद ये भगवान है। And Krishna can't tolerate that, so और फिर भगवान कृष्ण को ये सहन नहीं हुआ। using his Shakti, Rasha Shakti Vihaya Suyate Swabhaviki Jnana Balakriyacha, he uses his energies to accomplish his will, so he bewilders Mother Yasoda to think that he's simply his child. उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्तियों का प्रयोग करके माता यशोदा को ये भुला देते हैं कि वे भगवान हैं। So sometimes the residents of Vrindavan get a little glimpse of Krishna, but then Krishna just does that to allow the little excitement. तो कभी-कभी जो ब्रजवासी हैं वो भगवान श्री कृष्ण की एक झलक पाते हैं भगवान होने की, लेकिन फिर भगवान उन्हें विचलित कर देते हैं। When Krishna appears, everything becomes wonderful. जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो सब कुछ अद्भुत होता है। It describes in the very beginning of the Bhagavatam, when Krishna appeared, all of the constellations in the heavens aligned themselves with complete auspiciousness. तो श्रीमद् भागवतम में शुरू में यह वर्णन किया गया है कि जब भी भगवान प्रकट होते हैं तो सारे नक्षत्र अपने आप को सही स्थिति में रख लेते हैं। There's a beautiful description of the appearance of Krishna by Kavi Kanapur in Ananda Vrindavan Champu, where he describes Krishna and how Mother Yasoda, when she first saw her baby, she was amazed. तो आनंद Ananda Vrindavan Champu, आनंद वृंदावन चंपू पुस्तक में कवि कर्णपुर भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने का अद्भुत वर्णन देते हैं, और इसमें यह भी उल्लेख है कि जब माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पहली बार देखी थी तो पूरा विस्मित हो गई थी। You should read this description of Krishna's appearance. It's long. It's about 10 full pages. Describe how it was seen by Mother Yasoda. तो अगर आप पढ़ेंगे तो यह जो वर्णन है भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने का, ये करीब 10 पेज का है कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से प्रकट हुए थे और वह कैसे दिख रहे थे। First he looked like a jewel, a blue jewel. तो पहले माता यशोदा को लगा कि वह एक नील मणि है। Then his body appeared to be like water. और उनका शरीर पानी के जैसा लगा। Flowing water. So the scene keeps changing in Mother Yasoda's vision as Krishna is, exhibiting his transcendental qualities. तो माता यशोदा के सामने दृश्य बदलते जा रहे थे जैसे भगवान अपने अलग-अलग गुण प्रकट कर रहे थे। So everything becomes wonderful when Krishna appears. So therefore our duty is to always remember Krishna. तो भगवान के प्रकट होने से सब कुछ अद्भुत हो जाता है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान कृष्ण का सदैव स्मरण रखें। Prabhupada would say that a lot. श्रील प्रभुपाद यह अक्सर कहा करते थे। He said Krishna consciousness is easy, just remember Krishna. कहते थे कृष्ण भावनामृत होना तो बहुत ही आसान है, सिर्फ भगवान कृष्ण का स्मरण रखो। But what about that mind, that rascal mind? लेकिन हमारे ये मन का, यह मूर्ख मन का क्या किया जाए? Chanchalahi mana Krishna pravati balabhadrahan tasyaham nigamam maye vayar idam saduskaram. It's wild. Wants to go everywhere. तो हमारा यह मन बहुत ही चंचल है। Yeah, mind is just so restless. ये चंचल है, अस्थिर है, जंगली है। But Krishna in the next verse he says, don't worry, just practice. Abhyasena tu kunteya vairagya
chagriyate. Practice controlling the mind by always remembering Krishna. लेकिन भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि अभ्यास करो। भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करते हुए अभ्यास करते रहो। And Krishna is easy to remember. Just chant Hare Krishna. और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण तो बहुत ही सहज है, सिर्फ हरि नाम जप When we करिए। come here, we see the beautiful form of the Lord and its different manifestations. तो हम जब यहाँ मंदिर में आते हैं तो देखते हैं भगवान के बहुत ही सुंदर विग्रह, उनके अलग अलग अवतार रूपों में। And devotees make a mental picture of that transcendental form and keep it within their mind, remember it throughout the day. और जो भक्त हैं वो भगवान के जो रूप हैं उसकी एक छवि अपने हृदय में बना लेते हैं और उनको दिन भर स्मरण करते रहते हैं। So Srila Prabhupada used to say, I would say, and actually he poses the question in one verse in the Bhagavatam, in the 4th canto. He asks us in a very conjectural way, some people say Krishna consciousness is easy, and some people say it's difficult. तो श्रील प्रभुपाद यह काफी कहा करते थे और श्रीमद् भागवतम के 4th स्कंध में यह हमारे सामने एक प्रश्न के रूप में यह प्रस्तुत करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत आसान है। What is it? और कुछ बोलते हैं कठिन है। तो यह क्या है? Is it easy or is it difficult? तो यह कठिन है या फिर आसान है? The answer is, who said it? Somebody said both? Yeah, that's right. It is. तो किसी ने कहा कि दोनों है। So what makes it easy and what makes it difficult? तो क्या इसे आसान बनाता है और क्या कठिन बनाता है? There's one word that makes the difference between easy and difficult. तो एक शब्द है, यह सरल और कठिन दोनों में भेद कर देता है। Rupa Swami makes that statement in Bhakti Upadeshamrita. He gives that word. तो श्रील रूप गोस्वामी इसके बारे में बताते हैं उपदेशामृत के एक श्लोक के माध्यम से। Utsaha Nischaya. Nischaya means determination. So Prabhupada answers that question in the same verse. He says, those who are determined, it's easy. तो उत्साह निश्चय यानी दृढ़ विश्वास। Those जिनको who are- भी दृढ़ विश्वास है उनके लिए यह सरल है। Those who lack determination, difficult. जिनके अंदर दृढ़ निश्चय नहीं है उनके लिए यह कठिन है। Then we might say, well, how do I get determination? तो फिर कोई यह बोल सकता है कि मेरे अंदर दृढ़ विश्वास कैसे What's the आएगा? formula? इसके लिए सूत्र है Association. संग। No. And also, as it's also mentioned, one should give up anything that is contrary to one's advancement in devotional service. और हमें हर एक उस चीज का त्याग कर देना चाहिए जो भक्ति के प्रतिकूल है। Yeah, anukul instead of pratikul. तो अनुकूल प्रतिकूल। Yeah, anukul ne pratikul. No pratikul. हाँ, अनुकूल का अर्थ है कि जो प्रतिकूल नहीं है। Yeah, when you say pratikul, not pratikul, that means no pratikul. No cool. And we can say it one more time because 3 times is for emphasis. Ne kula. Hare Krishna. We तो just प्रतिकूल का मतलब है नहीं जो अनुकूल नहीं है। pass. Just everything that is favorable for devotional service. So how do you know what is favorable? तो जो भी भक्ति के लिए अनुकूल है वही करना चाहिए, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि अनुकूल क्या है? That comes by reading the books, by hearing from the acharyas. यह पुस्तकों का, आचार्यों की पुस्तकों को अध्ययन करने से हमें समझ में आएगा And by practicing. और उसका अभ्यास करने से। I notice devotees, at least maybe not so much here, but around the world, they're very knowledgeable of what to do. Devotees know what to do. How तो to, मैं कुछ भक्तों के बारे में जानता हूँ, विशेषकर यहाँ के भक्तों के बारे में नहीं ज्यादा जानता, लेकिन कुछ भक्तों के बारे में जानता हूँ। वे यह जानते हैं कि क्या किस प्रकार से किया जाए, but they don't know what not to do. लेकिन वो ऐसा नहीं करते जो नहीं किया जाना चाहिए। So they merge pratikul and anukul into one, तो वे अनुकूल प्रतिकूल को एक साथ मिला देते हैं, which is not so good.
वो ज्यादा ठीक नहीं है, because it deteriorates one's efforts in making advancement in devotional service. क्योंकि ऐसा करने से जो भी हम भक्ति में प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें अड़चन आ जाती है. So we hear how Krishna's transcendental birth is described here. And simply by hearing about that, then one becomes free from the desire to enjoy this material world. तो हम यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव, उनकी दिव्य प्रकट होने की लीला के बारे में श्रवण कर रहे हैं. सिर्फ इतना सुनने से लोग अपनी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं. These pastimes are phalastuti. They give transcendental fruit. Simply by hearing about them, one becomes free from the tendency to enjoy material life. तो इन लीलाओं का श्रवण करने की अपनी फलश्रुति है कि हमें अनुपम भेंट देते हैं सिर्फ सुनने पे, कि हम अपनी जो भौतिक जगत को भोग करने की इच्छा है उससे दूर हो सके. So Srila Prabhupada has given these so much of Krishna's leelas. श्रील प्रभुपाद ने हमें भगवान श्री कृष्ण की कितनी सारी लीलाएं दी हैं. And they're all divya. और ये सारी लीलाएं दिव्य हैं. Some people would say, well, you know, Krishna's pastimes of Vrindavan are really divyam. The other ones are a little less divyam. तो कई लोग यह कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो वृंदावन की लीला है और बहुत ज्यादा दिव्य हैं और बाकी अन्य लीलाएं कम दिव्य हैं. But that's like to say that there's two Krishnas. One is better than the other. तो इसके कहने का मतलब क्या यह हुआ कि दो कृष्ण हैं, एक कृष्ण कम अच्छे एक ज्यादा अच्छे. It's the consciousness. तो ये दरअसल हमारी चेतना पर निर्भर है. But of course, Krishna's pastimes in Vrindavan is the cynosure or the epitome of transcendental perfection. लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण के जो वृंदावन की जो लीलाएं हैं वे ज्यादा पराकाष्ठा पर हैं. So one should hear regularly. तो इसलिए उनका नित्य श्रवण किया जाना चाहिए. Satatam kirtayantu mam. One should chant regularly, hear regularly. Then Maya's gone. तो यदि हम उनका नित्य श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे तो माया दूर चली जाएगी. Prabhupada said, Maya is as strong as you are weak. तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि माया उतनी ही शक्तिशाली जितना हम कमजोर हैं. Prabhupada would quote one verse. I can't remember that verse. Maybe somebody could remember the verse. That if you look forward, you see Krishna. If you look different ways all around, Maya's in the back, she's up, she's down, she's on the sides, she's in the corners, everywhere. But Krishna is only straight ahead. You remember that verse? It's a Bengali verse, I think. No, it's a Sanskrit verse. Yeah. तो श्रील प्रभुपाद एक श्लोक के माध्यम से बताते हैं, अगर आप में से किसी को याद होगा तो बता सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हम सीधे देखते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे और इधर उधर आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी इधर देखेंगे तो माया है. Keep Krishna in front by remembering Krishna, always serving Krishna, associating with Krishna's devotees, and most of all Harinam Sankirtan. तो भगवान श्री कृष्ण को सदैव अपने सम्मुख रहिए, भक्तिमयी सेवाएं करिए और भक्तों का संग करिए हरिनाम संकीर्तन के द्वारा. Wherever there is the Harinam Sankirtan, Maya she's not even near. तो जहाँ भी हरिनाम संकीर्तन होता है माया वहाँ बिल्कुल भी नहीं रह पाती. Prabhupada would tell, and this I remember this statement many years ago when I first joined it. We would hear that if there's a class of transcendentalists or devotees who take part in Kirtan, and they dance, they put their hands on their hips like this, and they look at the floor in a very defiant way, saying, Maya, try and touch me. and they're chanting and dancing like that. तो ये बहुत पहले मैंने सुना था जब शुरुआती दिनों में. Come on, Maya, try to get me. जब मैं नया जुड़ा था तो वहाँ पे भक्त कहा करते थे कि जब भी वे हाथ उठाकर बहुत ही ऊंचे स्वर में कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं और फिर उसके बाद जब अपना नृत्य समाप्त करते हैं और वो नीचे मंदिर की फर्श की ओर देखते हैं, अपने कमर पर हाथ रखकर नीचे देखते हुए बोलते हैं, माया मुझे छूने का प्रयास करो. Safest place is in the kirtan.
तो इस दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह है कि भगवान के हरि नाम में भाग लेना, उसमें नृत्य करना। And kirtan solves all problems too. और कीर्तन हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर When देता you're है। doing kirtan, you don't even remember who you are sometimes. तो जब आप कीर्तन कर रहे होते हैं तो आपको कुछ भी नहीं याद रहता, ये भी नहीं याद रहता कि आप स्वयं All कौन है। problems go away. सारी समस्याएं चली जाती हैं। I'll tell one little ISKCON pastime. मैं आपको एक छोटी सी इस्कॉन की लीला बताऊंगा। Somebody ought to write a book about all of these interesting ISKCON pastimes because they're very instructive. तो किसी ने एक पुस्तक लिखी इस्कॉन की इन विभिन्न लीलाओं के बारे में, और बहुत ही रोचक है। There were two temple presidents that didn't agree with each other. तो मंदिर के दो अध्यक्ष थे जो आपस में जिनमें तालमेल नहीं बैठता था। And pretty much they avoided each other's association. वे एक दूसरे से दूर रहते थे। In other words, there was some tension between them. हमेशा उनके बीच में थोड़ा मतभेद हुआ रहता So था। one day there was a kirtan, एक दिन कीर्तन चल रहा था and they both attended the kirtan. और वे दोनों कीर्तन में भाग लिए। So the devotees are dancing in a circle. तो एक गोले में कई सारे भक्त नाच रहे थे। And one devotee's on one TP is on one side of the circle, and the other one's on the other side, making sure they don't get too close to each other. तो जो ये दोनों मंदिर के अध्यक्ष थे, वो उस जो गोला है उसके दोनों आखिरी छोर पर थे। But then there was one sannyasi there, and he knew the situation. तो वहां पर एक सन्यासी भी थे और वो इस सारी परिस्थिति को जानते थे। So he was going to do something. तो वो सोचे कि मैं कुछ करता हूँ। So he starts dancing with one of them. He pulls him. One of them starts dancing with one of the temple presidents, and they're dancing together. तो वो जो सन्यासी है वो मंदिर के एक अध्यक्ष के साथ नृत्य करने लगते हैं और वो दोनों नाच रहे होते हैं। So he's kind of like holding his hands, and they're dancing together. तो वो दोनों हाथ पकड़ के आपस में नाच रहे But थे। he's very strategically moving towards the other TP. और वो धीरे-धीरे वो दूसरे वाले मंदिर के अध्यक्ष के पास पहुंच So गए। now he's dancing right next to this other temple president. तो अब वो दूसरे वाले मंदिर के अध्यक्ष के ठीक बगल में नृत्य कर रहे थे। At the right moment, he pulls him in too. और एकदम ठीक सही समय पर वो उसका हाथ पकड़ के खींच Now the लेते three हैं of them are dancing. और वे तीनों नृत्य करने लगे। I think they forgot what their problem was. और फिर ये भूल गए कि समस्या ही क्या थी। And then what he did was he pushed them both together and escaped the dance, and now the two of them are dancing together. और फिर उन्होंने क्या किया कि अपने हट गए और सिर्फ वो दोनों मंदिर के अध्यक्ष ही नृत्य कर रहे थे। That was the end of that problem. और वहां से उस समस्या का समाधान हो गया। This is the power of the holy name. तो भगवान के नाम की ही Everything शक्ति है। becomes auspicious when Krishna's holy name is present. तो सब कुछ मंगलमय हो जाता है जब भगवान का नाम उपस्थित रहता है। And Krishna manifests himself in different ways, but for us, of course, the deity is so beautiful. Charms the mind, brings the heart towards Krishna in a very sweet way. But the holy name is always available wherever we are at any time. तो भगवान हमेशा अपने आप को कई सारे रूप में विस्तार करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के विग्रह कितने सुंदर हैं, हमारे हृदय को सदैव आकर्षित करते रहते हैं, मोहित करते रहते हैं। लेकिन भगवान का जो हरि नाम है वह हमें हमारे लिए हमेशा के लिए उपलब्ध है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Okay, it's a little after 9 o'clock. Hare Krishna. Any comments, questions? कोई प्रश्न है, कमेंट्स? Prabhu? Hare Krishna Maharaj, Dharmat Pranam. Thank you so much for your wonderful narration. Maharaj, just as you said, the deity form that attracts our mind more, and it's very easy to remember the deity. But when we chant the holy name, that is not so much like we remember Krishna exactly. Yeah. Keep chanting. Don't give up. Try to, remember the glories of the holy name also. The glories of the holy name are also mentioned throughout the Shastras, and there's one statement that the glories of the holy name are actually
what we say, much less than the actual glory, the holy name. We use the word understatement. No one can glorify the holy name because it's Krishna himself and all of his features. Nija sarva shaktis. Nam namakardi bahuda nija sarva shaktis. Remember that. All of Krishna's qualities, forms, names, pastimes, all of the energies of Krishna, everything that makes up the absolute truth is present within the sound of Krishna's name. So we just have to purify our consciousness through the process of bhakti and continue to chant and avoid the offenses. That's the most important thing, is to very carefully avoid the offense. And Bhakti Vinod Thakur explains that the tendency to commit offenses is enhanced by inattentive chanting. So he mentions the 11th offense. Oops, I forgot about it. Oh yeah, you're still here. Okay. Okay. That's called inattentive talking. Okay. प्रश्न किया था कि महाराज आपने बताया कि भगवान का जो विग्रह है वह मन को बहुत ही आकर्षित करता है, तो हम अपने मन में भगवान के स्वरूप को धारण कर सकते हैं, लेकिन हम हरि नाम को उस प्रकार से ध्यानपूर्वक नहीं जप कर पाते हैं। तो महाराज बताते हैं कि इसके लिए सबसे जरूरी है कीप चैंटिंग, भगवान के नाम का जप करते रहो। But practice the attentive chanting. One of the things that destroys attentive chanting is when we are in a hurry or very eager to finish our required japa. So don't avoid that mentality, trying to finish. Try to chant nicely. Don't worry about the time. ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें कुछ समय में जप खत्म करना है, इसके लिए जल्दी जप करने। हमें जप के प्रति जप को ध्यान पूर्वक बिना समय की सीमा को लगाए जप करना चाहिए। Chant clearly too. स्पष्ट रूप से जप करना चाहिए। The pronunciation is very important, because by proper pronunciation, concentration is enhanced. If you're not pronouncing it right, it's hard to actually develop concentration. सही उच्चारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम सही उच्चारण नहीं करेंगे तो हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। Yeah, so make sure you clearly pronounce the sound. तो आप यह ध्यान रखिए कि आप ठीक प्रकार से उच्चारण करते हैं। And that helps a lot with concentration. और इससे ध्यान लगाने में बहुत ही मदद मिलती है। Practice. Yes. Sarvadrik. I wanted to share one short lila. Okay. Gargamuni and Brahmananda, the two brothers. Can I hear you on this mic? It seems a little low. Hari Bol. There you go. Okay. No, we got it now, I think. Okay, so this is a lila between Srila Prabhupada, Brahmananda, Gargamuni, and their mother. And who? And their mother. Their mother. Okay. Their mother came to see Srila Prabhupada with her two sons, and she was bitterly complaining to Srila Prabhupada, "You took my sons. What more you want from me? You took my sons." So Srila Prabhupada answered, "You could give some money." Now he wants money. He took my two sons. Prabhupada was always thinking for the benefit of everyone. तो एक लीला है, प्रभु जी बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद श्रीमद् ब्रह्मानंद महाराज और श्रीमद् गर्ग मुनि महाराज के बारे में और उनकी माता के बारे में, कि एक बार उनकी माता आई और बोली कि आपने मेरे दोनों पुत्रों को ले लिया है। ये गर्ग मुनि महाराज और ब्रह्मानंद महाराज भाई थे और माता के पुत्र थे। तो बोले थे आपने मेरे दोनों पुत्रों को ले लिया और आप और क्या चाहते हैं? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कुछ पैसा भी दे सकती हैं। Sometimes we say, and we've also heard it being said, that Krishna doesn't see so much what you give, he sees what you're holding back. तो कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ये नहीं देखते हैं कि आप उन्हें क्या दे रहे हैं,
वो ये देखते हैं कि आप अपने पास अभी भी कितना रखे हैं. But everything belongs to him anyway, so he's just getting back what it's his. तो लेकिन वैसे तो सब कुछ उन्हीं का है, तो क्या फर्क पड़ता है कि कितना करते हैं. Okay, Prabhu, you had a question? Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. Regarding Maharaj, you're talking about the holy name's power and how we have to, in the most difficult times, the holy name is most powerful. And question is regarding when we're in difficult times, sometimes we also chant Namaste Narsingaya and we chant Guru Pranam also. So because we have more faith sometimes in Nrsingadev mantra or... Well, it says that Lord Nrsingadev is the protector. He has that emblem. Your question is, what's better? हरे कृष्ण. महाराज जो प्रश्न ये है कि महाराज आप भक्ति नाम की शक्ति के बारे में बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जैसे कुछ अलग अलग मंत्रों का भी जप करते हैं, जैसे हम नमस्ते नरसिंहाय नरसिंह देव से भी प्रार्थना करते हैं, तो क्या यह उचित है? तो महाराज उत्तर दे रहे हैं कि एक्चुअली दरअसल में नरसिंह देव का मंत्र का प्रणाम करना, उनको स्तुति करना, ये इसलिए क्योंकि नरसिंह देव हमारे संरक्षक हैं, और वो आगे इस बारे में ही बताना चाहेंगे कि क्या इन दोनों में क्या बेहतर है, ऐसा कुछ. There's another person you can call. His name is Prabhupada. एक और व्यक्ति हैं, आप उनको बोल सकते हैं श्रील प्रभुपाद. One very nice lady, she was a devotee, she was practicing Krishna consciousness, and she was being attacked by ghosts. एक माता जी, वो बहुत ही अच्छी भक्त थी, उनको एक बार भूतों ने उन पर आक्रमण किया. So she was chanting Nrsingadev's name. वे नरसिंह देव के मंत्र का जप कर रही थी. Ghosts were still coming. तो फिर भी भूत आ रहे थे. Then she started to chant Hare Krishna. फिर वो हरे कृष्ण का जप करने लगी. Ghosts were still coming. फिर भी भूत आ रहे थे. And then she called out to Prabhupada. और फिर उन्हें श्रील प्रभुपाद को बुलाया. Ghost was gone. भूत चले गए. There's a lot of mercy. All of them are merciful, but the quality of our calling is Prabhupada is like, I think you have to call a little bit more from the heart when you call from Krishna or Nrsingadev, but Prabhupada is always with you. तो ये सब दयालु हैं, नरसिंह देव, हरे कृष्ण महामंत्र सब दयालु हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद ज्यादा दयालु हैं. लेकिन ये हमारी गुणवत्ता पे भी निर्भर करता है कि हम कितने हृदय से उन्हें बुला रहे हैं. And Prabhupada said, when he was asked, one devotee said, Prabhupada, I have so many obstacles. Prabhupada said, you just come to me and I can kick out all of the obstacles. एक बार एक भक्त ने कहा, श्रील प्रभुपाद हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं. श्रील प्रभुपाद ने कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को लात मार के भगा दूंगा. So we can choose who we want to take shelter of. We have so, but it's all one and different. तो यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसकी शरण, किसका आश्रय लेते हैं, लेकिन यह आपस में अभिन्न है. It's all one and different. So there's a lot of mercy available. तो ये सब अभिन्न है, हमारे पास बहुत सारी कृपा उपलब्ध है. Anything else? Any other questions? Oh, okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj, for the wonderful class. Maharaj, sometimes there are situations which are very turbulent and aggravating. Turbulent. And in those situations, we try to chant the holy name
we try to chant the Hare Krishna Maha Mantra. But then while chanting also, somebody come and they comment, they give some comments or they ask something. So already we are boiling and that heat comes out to them. So although we are chanting, still we are not able to subdue our mind. So in those turbulent situations, what should we do to deal? हरे कृष्ण महाराज, प्रश्न ये है कि हमारी जिंदगी में कई सारी समस्याएं बहुत ही उथल पुथल वाली होती हैं, तो ऐसे में हमारा जो दिमाग है वह बिल्कुल भी शांत नहीं रहता। हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं और बहुत गर्म रहता है दिमाग। तो ऐसे में अगर आके कोई कुछ बोलता है तो हमारा गुस्सा उस पे निकल जाता है। तो हम देखते हैं कि हरि नाम का हम जप करते रहते हैं, फिर भी हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। What is that Bengali prayer by Bhakti Vinod Thakur? Kita janma adatu adha. How does it go? Bahirmukh Brahma janme nahi aas. Translation? I have Keet janam hua to ask that even I take birth as an insect, I should become your servant. And Bahirmukh Brahma, I don't want to become Brahma if he's devoid of you, Krishna. Mm-hmm. What is that? The one part of the song is you can protect me. You can Mado be Rakobi. Yeah, Mado be Rakobi. Mado be Rakobi. Jokichatumad. There you go. There's your answer. Just call out and that. Call out helplessly. If you're calling out helplessly, you're back to Godhead. तो महाराज बता रहे हैं कि भगवान को पूरी तरीके से शरण लेके उनको असहाय भाव में बुलाना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। When situations come to that point, if we don't have that faith, then when we actually call out for help, and it doesn't work. You have to have faith that Krishna is there. The mercy is available. यदि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम भगवान को बुला रहे हैं लेकिन उनमें विश्वास नहीं है, तो यह इस प्रकार से काम नहीं चलता। हमारे पास हमें देखना चाहिए कि बहुत सारी कृपा उपलब्ध है और विश्वास के साथ बुलाना चाहिए। What can we do? और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? Right. Manaso deho geho yokichu mo arpi lutu akpadenani. Everything, it all belongs to you. I'm simply your servant. That's all. जो भी है भगवान वह आपका ही है, और क्या कर सकते हैं? I mean, Radharani prays, Maslishyava pinaratam punastumam adarshanam amarmahatam karotuva yatatatava vidadatu lampato mat pranam nastu sevanaparaha. That's complete surrender. श्रीमती राधा रानी भी प्रार्थना करती हैं, आश्लिष्यवा पादरताम, शिक्षाष्टकम का 8वां श्लोक। Well, we might not be able to have that complete level of surrender, but we can pray like that. तो जब तक हमें पूरी शरणागति नहीं है, पूरा विश्वास नहीं, तब तक हम ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते। I'm yours. भगवान मैं आपका ही हूँ। I can't save myself. मैं खुद को नहीं बचा सकता। And if you don't want to save me, then that's your prerogative. तो यदि आप मुझे नहीं बचाना चाहते तो यह आपका ही विशेष अधिकार है। But Krishna is, he's always there for his devotee. लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमेशा हमारे लिए, अपने सारे भक्तों के लिए उपलब्ध हैं। But not in the way
sometimes not in the way we want him to be. लेकिन वह उस तरह से नहीं उपलब्ध रहते हैं जिस तरह से हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए उपस्थित रहे। Krishna, I fell into Maya. Why didn't you stop me? यदि हम ऐसा कहें कि भगवान मैं तो माया में गिर गया, आपने मुझे रोका क्यों नहीं? I told you not to go there. भगवान बोलेंगे कि मैंने तो मना किया था तुम्हें उधर जाने को, But you were so determined to go there that you didn't hear me. लेकिन तुमने इतना मन बना लिया था उधर जाने का कि तुमने मेरी सुनी ही नहीं। So, okay, thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai. Sri Sri Radha Madan Mohan ki jai. हरे कृष्णा। तो आज शाम को 8:15 बजे श्रीमद चंद्रमौली स्वामी महाराज मंदिर में कीर्तन करेंगे। अरे वाह! तो जो भी भक्त लोग आनंद के समुद्र में डूबना चाहते हैं, आप सबका स्वागत है। श्रीमद चंद्रमौली स्वामी गुरु महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, गौर ब्रह्मानंद।